don't let your past define your future. What does that mean? हे परिबो आगुरु तमरो केते भी मार्क्स आस्तुबो तमु टीचर माने कहउथिबे कि ये तो जमा पढ़ेनी आठो हे परिबनी, but that was your past. But what do you need to do is जदि तमे आजी भाबिबो कि नाही I will not let it define my future, you will तमे ठान नेबो आजी ठुही कि मु पढ़ी कि देखेबी करी कि देखेबी, so in future से लोक माने ही भाबिबे कि अरे आपको तो हमें अंडर एस्टिमेट करथुलु बट ही डिड इट. दैट इज व्हाई यू नीड टू डेयर टू ड्रीम एंड वी विल बी विथ यू टू मेक इट हैपन, राइट. सेतिपई आज वी आर लाइव अगेन विथ यू. आज आम स्टार्ट करवा आमर CHSE द वेरी फर्स्ट चैप्टर 11th रो इकोनॉमिक्स रो. ठीक अच्छे आमर फर्स्ट दीटा पेपर अच्छे इकोनॉमिक्स 11th रो, गोटे है इंडियन इकोनॉमी आ गोटे स्टैटिस्टिक्स. आम स्टार्ट करवा इंडियन इकोनॉमी सहित. इंडियन इकोनॉमी रो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जोटरे आम इंडियन इकोनॉमी रो स्टेटस देखुचे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी रे कौन कौन होची कौन कौन चली सब खबर आम जानिबा इंडियन इकोनॉमी रो, राइट. So you will know about the basic characteristics of contemporary Indian economy. Contemporary माने कौन? Which is ongoing. आजी का डेट रे जिमते हमें कहते ना, तो सेटा हमें देखिबा कि contemporary time रे Indian economy रो characteristics, basic characteristics या फिर status कौन चली छी. ठीक अच्छे बेसी लेट न करिकी we will start with the content part. ठीक अच्छे. So India को इन a global पेरिफेरा आम किमती देखुचे गोटे ग्लोबल लेवल रे आमर इंडिया को स्टेज रे अच्छी. ठीक अच्छे we know that India is one of the largest economy in the world and it is large in terms of both area and population. area भी और population दीटा जाको क्षेत्र रे India is very large and vast, we can say. So it occupies 24%, 2.4% of the total land area. This can be a question for you in the exam कि India पूरा total world रा कितने percent land occupy करे, which is 2.4%. आउ कितने percent population? It is 17.5% of the population of the total world India रे अच्छी. ठीक अच्छी ए दीटा जिनसे हमें जान ले. You need to remember it. In terms of economic development India कौन progress करची. It progress from an underdeveloped backward economy to a promising developing economy in the world. India आगे गोटे backward country थिला, गोटे backward economy थिला India रो, but with time India कौन हैला? India गोटे progressing economy सहित एबे one of the developing countries भितरे count होची. ठीक अछि तो एटा ही आमे ए चैप्टर रे पढिबा द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमरो इंडियन इकोनॉमी रा कोन कोन रहुची. सी सेम जिंस गुडा का हियर वी हैव रिटन which is 2.4% of the total land area of the world, 17.5 of the total world's population, then 10th largest economy exchange rate basis रे जदि हमें देखिबा India is the 10th largest economy and third largest economy on the basis of purchasing power parity जोटा हमें एठी देखुचे. सी फर्स्ट हमें इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी रे को लेवल रे अछि देखिदेले, देन वी विल कम टू सेटा हमें इंट्रोडक्शन नेले. एबे हमें धीरे धीरे सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विषय रे जानिबा. ठीक अछि. सो द फर्स्ट पार्ट इज इंडिया हैज अ लार्ज इकोनॉमी बट लो पर कैपिटा इनकम. एगुडा कैरेक्टरिस्टिक्स भितरे तमे लिखि जाओ. ठीक अछि. तमे डायरेक्ट ए नोट गुडा को भी तम लिखि परियो, एग्जाम रे भी यू कैन try to write the following. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हला कि
तार लार्ज इकोनॉमी अच्छी इंडिया रो किंतु लो पर कैपिटा इनकम माने आमे एठी कोन बुझिचे कि पर पर्सन इंडिया रे मोटा मोटी जणे केते टंका कमाउछि या फिर इंडिया रो टोटल इनकम केते इंडिया रो इनकम केते जितले आमे पर कैपिटा इनकम देखुचे बेसिकली इमिति बुझि जाओ कि जेमिति आमे लोक मानकु पचरंती कि अच्छा तुम जॉब करछ तुमर सैलरी केते तुमर इनकम केते सिमति ही आमे कंट्रीज को सेही बेसिस रे डिवाइड करूचे ठीक अछि। सो इंडिया हैज अ लार्ज इकोनॉमी इंडिया रो जेहेतु एरिया भी वास्ट आ पॉपुलेशन भी अधिका तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ वास्ट इकोनॉमी किंतु it has low per capita income माने कौन आस देखियो। So from the point of view or viewpoint of national income, geographical size and population, Indian economy is one of the largest. को basis रे national income, geographical size, population वगैरह वगैरह देखिले इंडिया गोटे large economy कि आउ exchange rate basis रे हमर इंडिया 10th rank रे आसुची ठीक अछि जार national income एतिकी but in per capita income terms in terms of per capita income India is one of the poorest countries ठीक अछि इंडिया रो जते बेले आमे per capita income देखुचे केते डॉलर्स रे देखुचे ठीक अछि so in dollars it is 1499 in 2013 but USA रो देखिबा जदि आमे कंपेयर करिबा it is 53000 ठीक अछि। So in terms of purchasing power parity भी हमर इंडिया भला गोटे रैंक रे अछि purchasing power parity माने in terms of dollar आमे देखुचे कि गोटे कंट्री रे गोटे certain amount of good आमे केते टंका रे किनी पारिबा यानी कि आमे केते सक्षम गोटे जिंस परचेज करिवा पई that is purchasing power parity सेतरे भी गोटे भला रैंक रे अछि किंतु कोठी माड खाउची इंडिया माड खाउची लो पर कैपिटा इनकम रो केस रे पर कैपिटा इनकम इंडिया रो बहुत ही लो इनफैक्ट इट इज सो लो दैट इट कम्स बिलो कंट्रीज लाइक सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जाम्बिया सुदान लाओस ए सब कंट्रीज बोली आमे अंडर डेवलप्ड बोली कहूचे बट तांको तळे आसी जाउची इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम बाकी सब जिंस रे इंडिया इज डूइंग गुड इन एक्सचेंज रेट बेसिस इंडिया इज ऑन द 10th रैंक इन परचेजिंग पावर पैरिटी रैंक इंडिया हैज सिक्योर्ड द 3rd रैंक किंतु लो पर कैपिटा इनकम गोटे प्रॉब्लम रहि जाउची एटा हला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आछी हम इंडिया रो it is heavy dependence on agriculture. One of the basic problems we have been facing since the independence is this only कि India has a certain amount of population जोटा सबु बेले is dependent on agriculture ठीक अछि। So a notable feature is heavy dependence on agriculture जोटा हमें first point रे देखुचे। Then we see that the labor force engaged in agriculture first थिला 70% in 1951 100% जदि हमें देखिबा जदि 100टा लोक नबा ता भितरु 70टा लोक आग in 1951 इंडिया रे एग्रीकल्चर ही करूथिले एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व थिले but it fell down to 49% in 2014 and 15 but से percentage टा कमी गला 2014-15 रे around 50% हे गला 20% almost कमी गला but आमे देखु छी कि प्रॉब्लम टा ताले कोन रहउची प्रॉब्लम टा एटा रहउची कि पॉपुलेशन जति कि एंगेज थिले एग्रीकल्चर रे सेते कि सिना कमी गला किंतु जीडीपी रे स्टिल हमरो इंक्रीज देखा जाई पारु नाही जीडीपी हमें माने कौन देखी जीडीपी माने आमर जितने की फाइनल गुड्स फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स हमें पाउचे सेटा को ऐड करले वी गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट सेटा को देखिबा को गले आमर जीडीपी टा आग जितने की थिला 56.5% रु आउरी कमी गला इन 2013-14 13% ऑलमोस्ट हे गला तो कौन पॉपुलेशन ता भितर कमी की किछि फायदा हला हमकु
जदि कम लोक मैंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व अछंती सेटा भल कथा किंतु से माने कमे कि कोन जीडीपी रो परसेंटेज टा कमे जिबाटा भल ना सेति कि लोक रही कि जीडीपी टा इंक्रीज होबाटा भल राइट तो आमे सेटा गोटे प्रॉब्लम देखिले सो एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सस्टेन more than 60% of the total population आज भी more than 60% involved अच्छंती ही बट आमे इन माने केसेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज देखुचे कि 4 ରୁ 5% लोक जमिति यूएसए यूके 4 ରୁ 5% लोक ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व रहउचंती बट तांगे जीडीपी को 2% ऑलमोस्ट प्रदान करूचंती तो ऑब्वियसली सिर्फ 5% रे जदि इट इज कंट्रीब्यूटिंग 2% तो भाव आम कंट्री रे एते सारा लोक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड माने केते करबा कथा जदि भी 50% भी नहीं जीडीपी रो एटलीस्ट 30 to 40% तो कंट्रीब्यूट करि परिबो ना किंतु से जिनसटा हेई पारुनी तो जेहेतु हमर कंट्री रो लोक माने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व्ड अछंदी किंतु जदि सेटार किछि वैल्यू आसुनी लाइक इट इज नॉट एडिंग वैल्यू टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री देन व्हाट इज इट पेइंग ऑफ इट इज नॉट पेइंग ऑफ राइट सेथि पई गोटे प्रॉब्लम आमे देखिले गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आमे देखिले कि हेवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेटा गोटे जिंस रह जाउची द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्पररी इंडिया देन वी सी पॉपुलेशन प्रेशर एटा हमें सब बेलठू माने देखि आछे कि पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग थिंग्स इन द इकोनॉमी फॉर अस राइट सो like many underdeveloped countries India faces heavy population pressure which take three principal forms India रे भी heavy population pressure अछि आ ताकू हमें तीनटा फॉर्म रे देखि पारुछे गोटे हला अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडरएम्प्लॉयमेंट जेतु बहुत लोक माने अछंती तांकू एम्प्लॉयमेंट जोगा हे पारुनी आ जदि जोगेई भी दउछे हमें तो से माने इमती एम्प्लॉय होचंती कि दैट इज ऑलमोस्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिते कि लोक नीडेड अछंती से काम रे इंक्लूड हेबा पई से काम करबा पई ताटो अधिका लोक सेतिरे इन्वॉल्व अछंती जोटा को हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली कहू आउ हाई डिपेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रेन जेहेतु पॉपुलेशन अधिक अच्छी तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली छोट पिलाठू नहीं कि बड़ जाई आसुचंती समस्त पॉपुलेशन रे तो छोट पिला माने जो अछंती से माने बहुत मात्रा रे अछंती एंड ऑब्वियसली द स्मॉल चिल्ड्रेन कैन नॉट वर्क दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड दैट इज व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स तो जेहेतु से डिपेंडेंट अछंती a large amount of population that we see ता भितरु जो छुआ माने अछंती they are dependent only then rapid population growth आमे देखुचे कि हमर जो population growth ता सेटा rapidly increase भी होची आमे आगो देखुतले कि China used to come on the first place but धीरे धीरे एमिति rapid population growth हला हमर इंडिया रे कि at a point of time it came on the first rank ठीक है सो इट इज अ प्रॉब्लम अगेन ऑब्वियसली जेहेतु अधिका लोक रहउचंती किंतु से माने एम्प्लॉय हे परुनांती से माने डिपेंडेंट रहउचंती से मानकर ग्रोथ माने पॉपुलेशन ग्रोथ अधिका होची किंतु से मानको फायदा किछि होनी से मानकर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होनी तो दैट इज अ प्रॉब्लम अगेन सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पॉपुलेशन प्रेशर ठीक अच्छी देन द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को आमे आसीबा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन ताहले स्टेडीली इंप्रूविंग रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आमरा स्टेडीली इंक्रीज हे जाउची स्टेडीली इंप्रूव होची ठीक अच्छी सो during the first decade of economic planning Indian economy suffered from capital deficiency माने हम इंडियन इकोनॉमी पाखरे एनफ कैपिटल नथिला हमरो अर्ली पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अराउंड 1950-51 आडे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट हमरो ओनली 10% ही थिला सो the rate of capital formation
धीरे धीरे आमर इम्प्रूव है अराउंड 1980s 1950s आड़े सेटा आम पाखे सेविंग इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन नथिला बट धीरे धीरे सेटा इंक्रीज है 1980s आड़े 1990 91 आड़े इट केम टू 23% 23.6 आउ इन्वेस्टमेंट आमर 23.4% increase है and in 2011 and 12 33.9% 38.2% 2013-14 रे 30.6 32.3 एटा कमी गला आमे देखुछे राइट सो इंडिया इज स्टिल फॉलिंग शॉर्ट फ्रॉम द ग्रोइंग इकोनॉमिक्स लाइक चाइना सेविंग आमर 49% इन द सेम पीरियड थिला फर्स्ट एटा इंक्रीज होतला टिके मझरे डिक्लाइन हेची 2013 एंड 14 आड़े बट जदि भी कैपिटल फॉर्मेशन आमर इंक्रीज हेची किंतु सेथिरे एबे भी वी आर फॉलिंग शॉर्ट ओनली वी नीड टू डेवलप मोर वी नीड टू फॉर्म मोर कैपिटल जेहेतु बाकी सब एशियन कंट्रीज लाइक चाइना आर मच फार इन अ मच बेटर प्लेस देन अस दे हैव 49% ऑफ आमर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द सेम पीरियड जो पीरियड रे आमे माने 30 ऑलमोस्ट करछे से माने 50 आड़े जाई सारलेनी which is a place we need to work on so amara improving capital formation gote point rahila gote characteristic rahila amara contemporary India ro what is the fifth characteristics amara fifth characteristic kon asila underutilization of natural resources ra underutilization we know what are the natural resources माने कौन आमे जानी छे किंतु तार जो यूटिलाइजेशन ता हम इकोनॉमी रे होची ए पॉइंट रे आमे जानु छे कि इट इज अंडर यूटिलाइजिंग कौन अंडर यूटिलाइजिंग माने कौन जेते की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तार हेई परिबो जेते की मैक्सिमम प्रॉफिट सेथरो हमको हेई परिबो सेति की होनी व्हिच मींस इट इज बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड ठीक अछि India is a rich country inhabited by poor people. आमर गोटे स्टेटमेंट आम ये कौन देखुचे कि इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज बट हेल्ड बैक बाय इनएडिक्वेट कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज एटा को एक्सप्लेन करके कौन कुआ कि आम कंट्री इज वेरी रिच इन द रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज आ बाकी सब जिनस we are doing good किंतु it is held back by inadequate capital नहीं technology नहीं enterprises नहीं जोटा natural resources रा maximum utilization करि परिबो आउ जोटा सेही rich natural resources को richer बनी परिबो तार maximum profit काढि परिबो right so we have the 4 points रे एटा को आमे एटा को एक्सप्लेन करछे फर्स्ट पॉइंट रहिला हमरा हाइड्रो पावर रो हमरा पोटेंशियल एसएस इज 41 मिलियन केडब्ल्यू तार यूनिट बट ओनली 10% इज करेंटली यूटिलाइज्ड हमरा 41 मिलियन जाई आमे यूटिलाइजेशन करि परिबा किंतु ता भीतर सिर्फ 10% आमे यूटिलाइज करछे एबे जाई minerals रे इंडिया ranks 4th in the world in iron ore deposit, 3rd in manganese and 5th in coal production जिमती हमें पढ़िले it is rich in the natural resources किंतु ताको utilize करबा पई we have inadequate capital and technology then coastline हमर इंडिया रा coastline भी is very vast coastline विषय रे हमें काहे की पढुछे because coastline has many resources as well as coastline ru amara import export bhi hei paribo so another point is water and climate amara groundwater resources they are about 10 times the average annual rainfall jodi ame try kariba ki ame rainfall ru ground water harvesting kariba ki simti kiछि अलगा टेक्नोलॉजी यूज करके से वाटर गुडा का यूटिलाइज कर परिबा तो मे बी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक ड्रॉट एक्सेट्रा राइट सो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इट इज द फिफ्थ पॉइंट ठीक अछि देन
Then we come to the sixth characteristic, right? चलो आमर सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन रहा है छुआ मैंने सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल आम देश रे पॉपुलेशन तो अधिक अच्छी वी हैव बीन सीन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किंतु द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इज पुअर व्हाट डज दैट मीन it means that India has an economically backward population. The average quality of people as productive agents remain low. Sei sabu lok mane which who can be a productive asset for the nation are low in numbers. They are not high. Backwardness shows up as low labor efficiency. Jo mane are involved in the labor work also they are low efficiency देखौचंती से माने factor immobility and limited specialization in occupation and trade factor immobility limited specialization these are some of the problems which are faced by the human capitals of our country economic ignorance and rigid caste based social structure further minimize the incentive for economic change जेहेतु आम कंट्री रो गोटे rigid social structure caste based structure भी अच्छी ता जोगु भी we are facing difficulties in developing the human capitals. Low labor efficiency stems from malnutrition, poor health standards, illiteracy, lack of training and barriers to occupational mobility. Sei lokko manankar bhi kiछि bhul nahi because they have been also facing problems like poor health, malnutrition. सेमानंको भल से खाइबा को मिलुनी सेमानंकर हेल्थ फैसिलिटीज तांको ठीक से मिलुनी तांको एजुकेशन फैसिलिटीज ठीक से मिलुनी जदि से सब बेसिक फैसिलिटीज ही लोक मानकु मिलिबनी तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप हबो केमिति राइट India also lags behind in healthcare manpower and global human development rankings. आमर जो global phenomena भी अच्छी आमर global level रे भी obviously जो root cause लोक माने जो टू स्टार्ट होचंदी ह्यूमन कैपिटल हबा जदि सेही रूट टा ही स्ट्रांग नहीं इंडिया रो देन ऑन द ग्लोबल एरेना से केमिति आगु को बढ़ियो सेठी भी वी आर लैगिंग बिहाइंड सो इट इज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ओके then the seventh characteristic आमर रहला unemployment and underemployment obviously आमे आगुरो भी देखि छे unemployment माने सेटा को आमे एक्सप्लेन केमति करबा आमर जो rapid population growth adds up to 12 million people to India's workforce every year सब वर्ष आम इंडिया को केते मिलियन 12 मिलियन पीपल आर एडिंग टू द वर्क फोर्स से माने काम करि पारिबे इन एवरी ईयर ओके सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड फेल टू कीप पेस विथ this growth in labor force resulting in chronic unemployment and underemployment but jette ki lokko mananko pai employment opportunities asuchi it fails to keep the pace सी सेते 12 मिलियन लोक मानकु एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करि पारु नाहंती आमे दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ unemployment and underemployment. This confirms India as a labor surplus but capital deficit economy. Note it as a keyword. India गोटे कौन labor surplus country. Labor are in surplus जेति की दरकार ताठ अधिक अछंती but capital deficient economy. Capital नाही से मानकु जोगेबा पाई. In developed countries unemployment is mainly cyclical. In India it is structural. Cyclical माने कौन इमति हे परिबो जेहेतु टेक्नोलॉजी चेंज हला कि अलगा अलगा चेंजेस जोगु डेवलप्ड कंट्रीज रे हे पारे कि किछटा लोक मानकु किछि टाइम पई अनएम्प्लॉयड रहिबा को पड़े but eventually they get employment. But India रे कौन it is structural. सेटा structure रे ही अछि कि एते कि लोक unemployed रहिबे ही रहिबे right arising from a deficiency of capital
एंड कॉम्प्लीमेंटरी रिसोर्सेज कहीं से माने अनएम्प्लॉयड रुहंती बिकॉज वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल नहीं आम पाखे आउ कॉम्प्लीमेंटरी ताकू ता सहित एड करने रिसोर्सेज भी आम पाखे नहीं रूरल एरिया सो वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ओवरक्राउडिंग इन एग्रीकल्चर जेहेतु आम आगुरी भी देखिले कि एग्रीकल्चर कंप्राइजेस अ वास्ट पार्ट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बहुत सारा लोक एग्रीकल्चर रे आमर इन्वॉल्व अच्छंती किंतु जेतिकी लोक दरकार माने जेतिकी लोक मानक भितर कामटा हेई परिबो एग्रीकल्चर रे ताठो भी अधिका लोक माने पार्टिसिपेट करूचंती व्हिच इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई we are facing underemployment and disguised unemployment. Underemployment माने तो आमे जानी छे, disguised unemployment माने let's take an example कि गोटे फैमिली रे 5 जन रहुचंती बट ता भितरु 5 जन जाक ही एग्रीकल्चर रे इन्वॉल्व अच्छंती किंतु से इमिति गोटे एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोड्यूस करछंती जो थे 3 जन भितर भी एग्रीकल्चरटा सेतिकी ही फ्रूटफुल हो पार तो 2 जन जो एक्स्ट्रा रोचंती 2 जन जो एक्स्ट्रा काम करूचंती दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड माने से मानको देखिले तो एमती लागुची कि दे आर एम्प्लॉयड किंतु इन एक्चुअल लाइफ इन रियल लाइफ दे आर डिस्गाइज्डली माने डिस्गाइज एज इन आमे किछि जिंस को लुचेबा को डिस्गाइज कोंती ना तो they are actually under the problem of disguised unemployment. So unemployment and underemployment are estimated to annually waste as many man years of labor as are contributed by entire labor force of United States. कौन कहते हैं unemployment और underemployment आम इंडिया रे in India unemployment और underemployment waste as many man years माने सेति की मैन इयर्स इंडिया रे वेस्ट होची जेते की यूनाइटेड स्टेट्स रा लेबर फोर्स माने से माने जेते की लोगों को चाकरी दउचंदी इंडिया रे सेति की लोग को गोटे ईयर रे अनएम्प्लॉयड आ अंडर एम्प्लॉयड रहि जाउछंती पूरा कंट्री रा लेबर फोर्स ही हमर कंट्री रा अंडर एम्प्लॉयड आ अनएम्प्लॉयड लोको सो इमेजिन इफ वी गिव देम द चांस कि से मानु को एम्प्लॉयमेंट मिलू maybe we can even someday come above the US also ठीक अच्छे then the 8th characteristic is extreme income disparities extreme income disparities माने कौन income माने तो हमें जानते disparity माने differences we have like heard of things like in India the rich become richer and the poor become poorer. Why we say so? Let's see. The extreme unequal distribution of income and wealth is another basic feature of Indian economy. Unequal distribution amara rahuchi in income. This inequality is greater in developing countries than developed countries. Developing countries रे ए phenomena टा तम माने बेसी तो बेसी देखि परिबो जो थरे amara rich आओ पुअर भितरे जो गैप टा सेटा वाइडन हे जाउची इनइक्वालिटी ऑफ एसेट ओनरशिप इज प्रिंसिपल कॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कॉज कौन रहला इनइक्वालिटी ऑफ एसेट ओनरशिप एमिति बहुत सारा लोक माने अछंती कि दे आर ओनिंग मच ऑफ द एसेट्स इन द कंट्री किंतु बाकी लोक मानक पाखरे रहिबा पई घर भी नहीं which is the difference we are studying here such concentration runs against the basic principle of social justice कोन एटा socially justified कि जनक पाखरे बहुत assets अछि जनक पाखरे रहिबा पई पूरा बंगला गाड़ी कार सब किछ अछि बट जनक पाखरे खाइबा पई गोटे वक्तर खाना भी नहीं so it is socially injustice for them so one of the problems we see is extreme income disparities eta gote characteristic rahila amara 8th characteristic ठीक अछि now we come to 9th characteristics ठीक अछि
ताहले नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक हमर कौन रहला नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक हला डुअलिस्टिक इकोनॉमी डुअलिस्टिक माने दोगलापन अछि आम इकोनॉमी रे गोटे कौन से दोगलापन चलो देखिबा द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डुअलिस्टिक द कोएक्सिस्टेंस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड बैकवर्ड प्रिमिटिव रूरल सेक्टर आम कंट्री रे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छी आउ प्रिमिटिव रूरल सेक्टर भी अच्छी रूरल सेक्टर रे कौन कौन अच्छी डोमिनेटेड बाय ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर रे आमर एग्रीकल्चर ऑब्वियसली इन रूरल सेक्टर मोस्टली इन द रूरल एरियाज आम कौन करुचे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करुचे इट एंगेज 49% ऑफ लेबर फोर्स contributes only 13% to national income, low productivity, low income and low standard of living, little access to modern amenities and life. आमरा 49% लोक सेथिरे ही included अछंती involved अछंती किंतु जेतेबेले national income रो कथा आसे only 13% is contributed to national income ताहाले तार productivity कोन लो रहउची सेठी जो लोक माने काम भी करूचंती इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तांकर इनकम भी लो रहउची तांकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो रहउची and they have very little access to modern facilities ठीक अछि but in modern industrial sector एकदम opposite हमरा होची कोन होची uses modern techniques of production techniques हमरा production process रे modern techniques use होची production income is high ଆମର income high रोची standard of living भी high रोची सेही लोक मानकर then very little contact with rural sector जेमते rural sector लोक मानकर modern sector पाखरे बेसी आलेना देना नाही सेमिति modern sector लोक मानक पाखरे भी rural sector लोक मानक सहित किछि ज्यादा contact रोहिनी the primary sector limits is expansion and development जेहेतु प्राइमरी सेक्टर रे लोक माने मोस्टली आमे कोन कहंती कि जमीन से जुड़े हुए लोग जेहेतु एग्रीकल्चर टा लैंड रे हुए तो से माने लैंड रे से सब एक्टिविटीज परफॉर्म करंती बट फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर से माने कोन दरकार कि अधिका टू अधिका फैक्ट्रीज हो सेही जगह ऊपर ही से माने चाहउछंती कि फैक्ट्रीज बन जाओ तो the agriculture sector actually limits their expansion से मानकर जो expansion टा agricultural sector जो को टिके टिके कमी जाउची हमें dualistic nature टा देखिले then हमें कौन देखिबा rapid growth of foreign trade विषय रे एबे हमें देखिबा foreign trade हमर आछी the rest of the world sector रे इकोनॉमी रे चारटा सेक्टर अछि ता भीतर गोटे हमर फॉरेन सेक्टर भी से फॉरेन सेक्टर रे हमें ट्रेड केमति करछे सेटा हमें 10th कैरेक्टरिस्टिक रे देखिबा as a developing economy India has witnessed growth and diversification of its external trade both in value and variety रे हमर इंडिया रे international trade बहुत भल से चलिछि since the introduction of globalization India's trade to GDP ratio has been continuously improving globalization हेबा परठो इंडिया रो जो हमरो trade to GDP ratio increase हे चलछि one way to measure globally linked and one way to measure how globally linked an economy is comparing its international trade with GDP तार international trade को GDP सहित गोटे कंट्री रो जदि हमें कंपेयर करिबा हमें जानि परिबा कि सी केते ग्लोबली लिंक्ड सो इन 1997 हमर 22.2% इंडिया रो जीडीपी was taken by international trade in 2014 almost 50% he salani so 28% increase ame dekhiche in 17 years and one of the good news we have is India is now ahead of both USA and Japan in trade GDP ratio showing increase in integration with world economy in fact amara India kono USA और जापान को भी टक्कर दे सालानी in terms of GDP ratio ठीक अच्छे so it is the 10th characteristics that we see about contemporary India which is rapid growth of foreign trade so हमें देखिले हम India in 10 sectors माने
10टा कैरेक्टरिस्टिक्स आम इंडिया रो अलगा अलगा आम देखिले हाउ इट इज डूइंग इन एवरी सेक्टर व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स डू वी नीड कौन कौन ऑलरेडी डेवलप हेई भी सारी को एरिया रे इंडिया को आउ काम करबा दरकार आ को इंडिया रे को फेज रे को एरिया रे इंडिया ऑलरेडी भल काम करुची सेटा भी आम देखीदेले सो विथ दिस आम जानिले कि आम कंटेम्पररी इंडिया रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन रहुची इफ इन एग्जाम यू आर आस्क्ड आ भितर किसी भी क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक टा लेट्स सपोज तुमको गोटे 8 मार्क क्वेश्चन आसीबो कि सब गुडा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ तो वी हैव हियर गिवन यू 10 कैरेक्टरिस्टिक्स तमे जदि चाहिबो यू हैव द टाइम यू कैन एक्सप्लेन द 10 नहले भी 8 to 9 if you can explain it is enough for you with the same points we have given you can copy from here तमे चाहिए यार स्क्रीनशॉट नहीं पाइबो नहले you can see the notes in the WhatsApp group also तापरे एबे आमे आर conclusion को आसी जिबा in the conclusion we see that India has a promising yet unfinished journey India has a promising journey no doubt India is one of the developing countries India can do much better but the journey is unfinished yet it has to do many more work in many sectors from the 10 characteristics above we conclude that the Indian economy is emerging as one of the most promising developing economies in the world today however to reach the status of developed country ame ebe developing ache हमको डेवलप्ड हेबा पई इंडिया स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो आमे 10टा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन देखले क्विक रिवीजन गोटे कर देबा लार्ज इकोनॉमी पर लो पर कैपिटा इनकम पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर unemployment and underemployment population pressure extreme income disparities improving but insufficient capital formation dualistic economic structure underutilized natural resources rapidly growing foreign trade यही 10टा कैरेक्टरिस्टिक्स जदि तुम चाहिए सब गुड़ाक एज अ की पॉइंट मन रखि पारिबो एंड व्हेन यू विल गेट द क्वेश्चन एंड एग्जामिनेशन यू कैन राइट द फॉलोइंग 10 या फिर तुमको जदि इंडिविजुअली भी आसे तमें गोटे गोटे रो एक्सप्लेनेशन भल से दे पारिबो एज वी हैव शोन यू इन द पीपीटी राइट हियर सो द स्ट्रक्चरल transformation continues from a feudal agrarian base toward a diversified globally integrated economy amar India as a feudal agrarian economy start karthila ebe we are running towards globally integrated economy as well and we hope that we will be a developed countries one of the developed countries in the world very soon जहाँ भी तुमको या भीतर बुझा पड़नी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक आम देखीचे इफ यू वांट टू ए पॉज करके तुम बाकी गुड़ाक भलसे तार नोट्स भी तुम बन पार निज आड़ इन द कॉपी आउ इन द नेक्स्ट क्लास आम डिस्कस करवा या रिलेटेड some of the MCQs which will help you in your examination as you have 21 MCQs in your exams so it will help you जहाँ जहाँ possible MCQ हो परिबो सब गुड़ाक आमे डिस्कस करिबा ठीक अछि so that's it for this class see you in the next class thank you